So, good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and we're back again for the YouTube live sessions on finance. So, in this session, I'll be talking about one of the most important concept or topic, or by whatever name you may call it, capital structure. And we're talking about capital structure only from the point of view of finance and nothing else. Okay. So we're talking about capital structure. What do we mean by capital structure in financial management? What exactly is capital structure and why is it so important for us to know about capital structure? Okay. So what happens in capital structure is it basically tells you the proportion of capital in the capital structure of the organization. In simple terms, like for example, there is a company. Okay. There is a company A and we want to know how much capital the company has. Okay. So the company might be having a capital of 1000 crores that the company states, and that is visible also in the annual reports of the company. That is just an hypothetical example which I am taking. So company A has a capital, total capital the company has is 1000 crores. Now out of this 1000 crores, if we want to know that how much is into equity, how much is into debt, or how much has been raised through various sources of finance. That is where the importance of capital structure comes into place. If a company is having a total capital structure of a certain amount, and we want to know how much has come from equity, how much has come from debt, how much has come from other sources of finance. Basically, we're trying to bifurcate this 1000 crores into different parts or aspects of capital. So if the company has a total capital of 1000 crores, it might be that 400 crores are for equity. It can be that 500 crores have been raised through debt, and the rest 100 crores are through the other sources of finance. So that is the importance of capital structure in an organization. So capital structure is basically telling you if the firm has total capital, then out of that total capital, how much is been allocated to equity? That is, how much has been raised from the market through the selling of equity shares of the company. Because when a general investor or maybe an idle investor is buying the shares from the market, he's ultimately buying something and giving the money to that company. And the company is making money from that investor. So is the company kind of raising money from equity, or is the company raising money through debt? Has the company taken some long-term loan? Has the company issued a bond or a debenture or any other kind of security as synonymous with debt? Or, like case number 3, the company has raised to other sources of finance. Now, these other sources of finance क्या हो सकते हैं? These other sources of finance can be your preference shares. Okay, it can be your short-term securities, be it your commercial papers or certificate of deposits or government securities, government bonds, T-bills, T-notes. All these things are available in the market. They might also have invested into some hybrid instruments, some hedge funds. All these things can be the other sources of finance from which the company has raised money. If someone has invested into the capital of the company, or if someone has bought the shares of the company, that person would be expecting a certain amount of return from that, right? अब उस person को कितना return मिलना चाहिए? Same. If someone has lent money like to the company, because the company has raised money through debt, तो company ने एक bond issue करा, and large number of people they purchased that bond and they supplied money to the company, तो उनको कितना rate of interest देना चाहिए? Plus the other sources of finance भी, ठीक है? So every person is expecting a certain rate of return. When they are expecting in terms of equity, so that is the rate of return on equity. When they are investing on debt, so that is the rate of return or yield in case of debt. And preference shares, maybe it is the rate of return. चाहे तुम्हारे treasury bills हो, चाहे तुम्हारे hedge funds हो, या फिर hybrid instruments हो, we call them as a return or a surplus, like which everyone wants to generate.
But in case of debt instruments, instead of return, we call it as a yield, because yield comprises both like the market to market gains, which are in terms of the price of the bonds, and also the coupon payments, which are nothing but the interest payments which anyone is like receiving from bonds. Okay. अब कितना रिटर्न कैसे मिलना चाहिए ये सब, so these things we'll try to understand. Let's get to a new whiteboard. Okay. So let's start with debt. Okay. So let's begin with debt. So if a company has raised debt, so how to calculate the cost of debt? Okay. कि कितनी डेट कंपनी ने रेस कर, जितनी भी कंपनी ने लाइक मतलब कि डेट रेस करी है तो कितना पैसा मिलना चाहिए, या कितना रेट ऑफ रिटर्न या कितना यील्ड उस डेट पर होना चाहिए आइडियली. ओके. सो like what do we do in case of debt? There is a formula available, like when we calculate debt, so there is a formula available, and cost of debt is represented by kd, k underscore k in like subscript you have d. Okay. So what is the formula for that? It is basically your interest rate, which is I, into 1 minus taxation, t is the tax rate, plus द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब फाइनल जब आपको पैसा अपना वापस मिल जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसको लाइक हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, लाइक मोर और लेस, माइनस BO इज द नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय अगेन द रिडेम्पशन वैल्यू प्लस द नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2. So this is a formula that helps you to calculate your cost of debt. कि exactly तुम्हारा cost of debt कैसे है, कि कितना तुम्हें अपने जिन लोगों ने debt लिया है, जो debt holders हैं, उनको कितना debt तुमको वापस करना. ओके. अब इंटरेस्ट रेट तो समझ आ गया. इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द कूपन पेमेंट, कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, 5-6. T इज द टैक्स, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब बॉन्ड कितने टाइम पे इश्यू करा है, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का. दिस इज द RV को तुम फेस वैल्यू भी कह सकते हो. बोलते हैं ना बॉन्ड ऑफ 100 रुपीज हैज बीन इश्यूड फॉर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years. सो लाइक दिस इज द फेस वैल्यू. एंड BO का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली द नेट प्रोसीड्स. तो इसमें मान लो अगर 100 रुपए का बॉन्ड है एंड दे हैव सेड दैट द बॉन्ड इज बीन इशूड एट अ डिस्काउंट. ठीक है, मान लो कि 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो हम लाइक डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 4 रुपए. अब देयर कैन बी ऑल्सो सम फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, सम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मतलब कि लाइक मान के चलो जो रोजमर्रा का जो पेपर वर्क होता है फॉर लाइक इशूइंग द बॉन्ड्स, उसमें मान लो कि 5 रुपए का खर्चा है, तो तुम्हारा जो नेट प्रोसीड्स होगा, जो BE होगा, दैट विल कम आउट टू बी 91 रुपीज, 100 minus 9. ओके. सो दिस इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइक BO और द नेट प्रोसीड्स कम इनटू प्ले. हो सकता है कि बॉन्ड लाइक प्रीमियम पर इशू हो, तो अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो माइनस स्टार की जगह ये प्लस स्टार हो जाएगा. ठीक है, बट कॉस्ट जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो तो माइनस ही होनी है. तो इस वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करते हैं जो मैंने अभी बताया. तो ठीक है, सो दैट इज द बेसिकली द नेट प्रोसीड्स दैट यू हैव. अब क्या होता है, अगर फेस वैल्यू बॉन्ड का 100 है ना, तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज आर इशूइंग दी बॉन्ड्स एट अ डिस्काउंट. वो कहते हैं कि 90 रुपए का बॉन्ड ले जाओ. ठीक है, तो 90 रुपए इज द BO. दे आर ट्राइंग टू issue the bond at a discount and like kind of redeem it at par. Par value is 100 and 90 is the value of discount. Sometimes they say we are issuing the bond at a premium. Instead of ये वो बोलते हैं हम बॉन्ड लाइक प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 105 रुपए पे बॉन्ड like they're issuing, so that is the premium amount. So that completely like it depends upon the company on what kind of bonds the company is issuing. Okay, अब इसका let's try to do a basic numerical on this debt के केस में. मान लो, let's take an example. Just assume that you are having a bond of a face value of 100 rupees. ठीक है, face value of the bond is 100 rupees. फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है 6 रुपए की. ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है बॉन्ड? मान लो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है बॉन्ड.
टैक्स रेट कितना चल रहा है? 40% चल रहा है. And for how many years the bond has been issued? For 7 years. It says to calculate the cost of debt. कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5 into 1 minus the rate of tax, right? Plus 100 minus the net proceeds. That would be face value minus the flotation cost. 100 minus export. This whole bracket, ये बस ये वाला ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ये पूरा नहीं, बस ये वाला would be like divided by 7 because 7 years है, divided by the face value or the redemption value plus 94 divided by 2. तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, so let's calculate this value. जब तुम कैलकुलेट करोगे, it will come out to be 8.6%. So that is the cost of debt. मतलब इतना कंपनी को उनको वापस करना ही करना है. That is the cost of debt or cost of raising money from the debt holders. ठीक है? So that is basically how you are calculating the cost of debt in this case. And this formula is very common. And 99.9% of the cases में तुम ये formula तुम use करोगे. ठीक है? ये बात होगी हमारी डेट की. अब एक क्वेश्चन आता है, डेट की बात होगी, अब इक्विटी के लिए कैसे निकालोगे? इक्विटी में देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ मेथड्स, बट I would be talking about the most commonly used method or the most common approach used by top financial analysts, the CAPM model. Okay, it's a very intensive model. तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, will try to cover this model. So this model is called the capital, C की full form, capital. A is for asset, P is for pricing, and M is model. ठीक है? CAPM model is very commonly used while calculating the cost of equity, which is the capital asset pricing model. अब capital asset pricing model को समझने से पहले let's try to understand the difference between two things. One is your non-systematic risk. इसको we also call it as diversifiable risk. Other you have as systematic risk, and we also call it as non-diversifiable risk. तो याद करने का तरीका ये रख लो, अगर नॉन सिस्टमैटिक है तो इट इज सेम एज डाइवर्सिबल उल्टा, सिस्टमैटिक है तो इट इज सेम एज नॉन डाइवर्सिफेबल उल्टा. ओके, सो व्हाट इज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क एंड डाइवर्सिफेबल रिस्क? एज द नेम सजेस्ट, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क which the company can control or which the company can diversify or manage. हो सकता है कंपनी के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, मे बी दी एम्प्लॉयर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर सैलरीज या स्ट्राइक पे चले गए हैं या कुछ ऑपरेशनल इशू हो. सो दीज इश्यूज कैन बी हैंडल्ड बाय द कंपनी on its own, and these factors are controllable by the company. When we talk particularly in the field of finance, it can also be eliminated by creating a portfolio. पोर्टफोलियो के बारे में बहुत सेशंस में कर चुका हूं अपने. इट इज सिंपल. सी, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. इफ यू जस्ट हैव a single stock or a particular stock in your portfolio, or you are having a stock from a one particular industry or sector only, तो जब वो इंडस्ट्री पूरी गिरेगी नीचे या पूरा वो स्टॉक नीचे गिरेगा, your portfolio value will turn out to be negative or zero, because indeed you have nothing to support it. Let's take a simple example. If before this COVID-19 pandemic, if anyone had invested only in the hospitality sector, that hotels and travel and tourism industry, so when COVID struck, like no one was traveling, right? So all these hotel stocks, these traveling company stocks, they came down. So if a person who had held only just travel and tourism stocks or the hospitality stocks, the value of the portfolio would have turned to be zero or even negative, because सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में उसने किया इन्वेस्ट. But if a person would have invested in the IT sector as well, in the FMCG sector as well, or the pharma sector most importantly, then अगर उसका
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सेक्टर्स नीचे जा रहे थे बट बाकी सेक्टर्स ऊपर उठ रहे थे. So still his portfolio would have balanced, or still that person would have got a certain return. So that is the benefit of creating a portfolio when you are having non-correlated assets with you. So अगर तुम portfolio बना लोगे, then also you can diversify your risk. And this diversifiable risk is denoted by standard deviation. Okay? Standard deviation. And now what is non-systematic risk? Sorry, what is systematic risk or non-diversifiable risk is just the same thing. It is that risk which is not controlled by the company, and this risk can also not be diversified away from the portfolio creating strategies. So that is one thing you need to understand. अगर तुम portfolio भी बना लोगे, still these risks cannot be eliminated. Why? Because it can be due to certain factors which no one can control. Maybe पूरी economy ही like recession में चली गई. Some factors related to interest rate, some factors related to market risk which no one can control. Okay, तो जो factors तुम्हारे control में नहीं हैं and तुम control कर भी नहीं सकते, तो systematic or the non-diversifiable risk. And this is like represented by beta. Beta is a proxy of systematic risk. Okay, like when we talk as per the CAPM model. Though अगर हम like different models की बात करें, you have the Sharpe's index models and other models, तो हम अभी like उनकी बात नहीं कर रहे हैं. We're just talking about the CAPM model. तो उसमें beta is the proxy of systematic risk. Okay, beta does not measure systematic risk, is just a proxy. Okay, so let's get back to the CAPM model. Let me erase all this. Yeah. So CAPM model helps you to calculate the cost of equity. अब इसका एक फॉर्मूला होता है which is KE is equal to beta, and this will be just a second. Yeah, the formula for this is RF. RF is nothing but the risk-free rate plus beta into RM minus RF. RF is the risk-free rate. मतलब you are investing in those securities which are risk-free, जहाँ पे कोई risk नहीं है. It can be government securities, government bonds, government T-bills or your notes. And जहाँ पे risk कम है, वहाँ पर return भी कम होगा. So RF is basically when you are investing in the risk-free assets, तो ये risk-free का rate of return है. Beta we talked about, it's a measure of systematic risk. RM is the return on market, कि market कितना return दे रही है. It can be Nifty, Sensex, all this. ठीक है, इंडेक्स पर कितना रिटर्न आ रहा है, and this is RF. And जब हम इन दो टर्म्स को माइनस करते हैं, इस पूरे टर्म को हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम. We call it as market risk premium. And market risk premium क्यों बोलते हैं? Because you are undertaking risk, and उस रिस्क को लेने के लिए you are paying more premium over the risk free rate. Over the risk free rate, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें कम रिटर्न मिल रहा था, बिकॉज यहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग इन टी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड रिस्क यहाँ पे कम है. तो उस रिस्क, तो फॉर हायर रिटर्न यू टेंड टू टेक मोर रिस्क, एंड तुमने लाइक मार्केट में इन्वेस्ट करा. So that is the difference between RM minus RF. This is a risky kind of scenario and RF is the non-risky one. ठीक है, so this is the formula that is basically used to calculate the cost of equity. RF plus beta brackets में RM minus RF, and this whole term is called the market risk premium that you need to understand. Okay, so let's try to solve a question on this. See, it can happen they have given you as the risk-free rate as 6%, beta is given as 0.6, your return on market is given as 10%. Make note, your return on market should always be greater than RF. Okay, yeah, it says calculate the cost of equity. So now, like you know the formula for this, 6% is RF, beta is 0.6,
10 minus 6, which is Rm minus Rf. So when you solve it, 10 minus 6 is 4 into 0.6 plus 6, 8.4. 8.4% is the cost of equity. And sometimes, like in questions, what happens? They'll give you straightforward कि the market risk premium is 4. तो अगर 4 डायरेक्टली दे दिया है तो they won't give you the value of RM. Like ये वैल्यू क्वेश्चन में दी ही नहीं होगी. Then at that time people get confused कि RM तो दिया नहीं है and market risk premium दे दिया. तो इसका मतलब ये है इन्होंने पूरे ब्रैकेट की वैल्यू ही दे दी है. तो it doesn't matter you have RM or not. ठीक है. एंड वैसे तुम निकाल भी सकते हो अगर तुम चाहो तो, बिकॉज द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन मार्केट माइनस द रिस्क फ्री रेट. ये 6 है, ये 4 है, तो दैट वुड बी व्हाट 6 + 4 10 ओनली. ठीक है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बट इसकी फिर नीड नहीं पड़ेगी. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो. ओके, अब बीटा की बात हम कर ही रहे हैं, लाइक विच इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. तो सीएपीएम मॉडल तुम्हारा क्या बोल रहा है? सीएपीएम मॉडल इज टेलिंग यू अबाउट एन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टमैटिक रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. वो कह रहा है कि अगर हम सिस्टमैटिक रिस्क को, इफ यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क ओवर द रिस्क फ्री रेट, देन व्हाट वुड बी आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, अब अगर हम बीटा की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक मोर अबाउट बीटा. बीटा तुम्हारे इट कैन बी सी बीटा है. सो देयर कैन बी लाइक 2 types of beta you can have. If the beta is greater than 1, it's an aggressive beta, or you are investing in an aggressive stock. If beta is less than 1, it is a defensive beta. And beta is equal to 1 की हम बात करते हैं. देखो, if your value of beta, that is the measure of systematic risk or non-diversifiable risk, is greater than 1, it means you are investing in aggressive stocks or aggressive companies जहां पे थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या होता है? If your market is rising by 10% and your beta comes out to be like 1.2, like which is greater than 1. अगर मान लो कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, एंड मार्केट से मेरा मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट इंडेक्स. If the value of the market index is rising by 10%, your stock in which you had invested, which is the aggressive stock, will rise by 12%. मतलब जितनी तेजी से मार्केट बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से वो स्टॉक बढ़ेगा. एंड सेम इज ट्रू वाइस वर्सा एज वेल. एंड इसका ये ड्रॉबैक भी बन जाता है, अगर मार्केट 10% से गिर रही है तो स्टॉक 10 से नहीं गिरेगा, वो 12 से गिरेगा. तो दैट इज वन थिंग. जितनी तेजी से मार्केट बढ़ रही है, गिर रही है, उससे ज्यादा तेजी से स्टॉक भी बढ़ रहा है, गिर रहा है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव स्टॉक्स, मान लो कि बीटा 0.6 का है विच इज लेस देन 1. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर 10% से मार्केट बढ़ रही है तो स्टॉक बस 6% से बढ़ेगा. दैट इज अ ड्रॉबैक इन सम केसेस. मतलब कि मार्केट ज्यादा से बढ़ रही है बट स्टॉक बस 6% से बढ़ रहा है. बट अगर मार्केट 10% से गिरेगी तो स्टॉक बस 6% से गिरेगा. दैट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव फैक्ट. ठीक है. एंड बीटा इज इक्वल टू 1, ये मार्केट बीटा होता है. मतलब कि निफ्टी का बीटा लाइक वुड बी 1, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग लाइक निफ्टी विद निफ्टी और सेंसेक्स विद सेंसेक्स, तो इसका बीटा 1 ही होना. सो दीज आर द 3 kinds ऑफ बीटा दैट यू शुड नो while you are doing the CAPM model. अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन एग्रेसिव पोर्टफोलियोज और एग्रेसिव स्टॉक्स. मार्केट अगर बढ़ रही है तो स्टॉक उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, बट अगर मार्केट गिर रही है स्टॉक उससे भी ज्यादा गिर जाएगा. When beta is less than 1, you are investing in defensive stocks. मार्केट बढ़ रही है तो स्टॉक कम से बढ़ेगा, बट अगर मार्केट गिर रही है तो स्टॉक तब भी कम से गिरेगा. बट बीटा इज इक्वल टू 1 इज फॉर द मार्केट बीटा, बिकॉज मार्केट को तुम किसी से तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो. सेंसेक्स को तुम सेंसेक्स से कंपेयर करो, चाहे तुम निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर करो, बात एक ही. राइट. So that was basically the session was upon understanding the CAPM model, that is to calculate cost of equity most importantly. अब CAPM model की बहुत सारी we have assumptions as well. We have the security market line, the capital market line. So all these things we'll talk about in the next session. Okay. But up till now, it was enough for you people to get to know at least about the cost of debt and cost of equity.
Okay. So see you in the next session.